कैसे हो दोस्तों? All is well. You know that very well. Today we are discussing and we would like to think about the discussion of EMI, electromagnetic induction, part 10. You know that very well. In part 9 we discussed the supreme case. You know that very well. Part 9, if you have analyzed very carefully and perfectly, then you have idea about part 9. In part 9 we discussed two cases: initial state and final state or steady state for LR circuit. If you observe and if you have idea, then you know that in last part, what is the heading or what was the heading? It was LR circuit. So friends, today we would like to think about the second part of this LR circuit. In first part we discussed two most important states: initial state t is equal to 0 just after the closing of switch, and then t is equal to infinite, that means after very long time. It is called final or steady state situation. Now friends, today we would like to think about the transient state. What do you mean by transient state? Transient state, that means the state between initial and final. Whatever the intermediate state between initial state and final state, it is called transient state. If you observe this diagram, this is, you can see that initial state, that means at t is equal to 0 time, and after very long time current becomes constant. It is called final or steady state situation or steady state. This is t is equal to 0 state, this is t is equal to infinite state. Whatever the, we can say that the current particularly between these two states, initial state, final state, that means for t is equal to 0 and t is equal to infinite. So transient state, that means the current for the duration between these two states, 0 less than t less than infinite. That means we would like to discuss about this case. That means करंट 0 है और करंट कांस्टेंट है, उसके बीच का सिनेरियो, यानी करंट 0 में से हीरो होता होगा या हीरो में से 0 होता होगा. 0 में से हीरो होना मतलब करंट इंक्रीज होता होगा, और हीरो में से 0 होना मतलब करंट डिक्रीज होता होगा. सो टर्न बाय टर्न वी वुड लाइक टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, केस नंबर 1, you can see it is simply the rise of current. Rise of current, that means current increases from initial state to final state. That means current simply starts its journey from 0 value to, you can see that, maximum value. There is a graph, you can see this is the graph for the rise of current. We would like to think about this situation. Current increases, you can see friends here. This one is the LR circuit. There is a battery, there is a switch. Whenever switch is closed at t is equal to 0 time, just after closing of switch, what happened? Just after closing of switch, you know that very well, initially current passing through inductor 0. This is called 0 state. You can see this is t is equal to 0 state. I am representing from this side. Okay, t is equal to 0. But once you can see that switch is closed, now gradually current passing through inductor increases. This is called rise of current. And after very long time, what happened? Current passing through inductor becomes constant. In short, current gain its steady state situation, or I can say that the constant state situation. Anyway friends, we would like to think about the rise of current. So what is the formula of this rise of current? It is given by equation I is equal to I max. I is equal to I max, inside the bracket 1 minus e raised to, you know that very well, this is the base related e, that means अपन लोग जो logarithm में e base लेते e raised to minus t by tau, minus t upon tau. What do you mean by t? T representing simply time, but tau representing the time constant. Its value inductance upon resistance. What is the value of time constant? It is given by equation L by R. Don't forget, very IMP for MCQs and JEE NEET point of view. Okay, so this is the equation of, you can see that rise of current whenever switch is closed and current passing through inductor increases, current rises. Then how can you give the equation of this current? It is given as this equation I is equal to I max. I max is the maximum current, you can see, inside the bracket 1 minus e raised to t by tau. Okay friends, once again, tau representing time constant, it is L by R.
ये डिराइव भी किया जा सकता है। बाजू में मैंने उसकी कहानी बताई है, मैं ये कहानी सिर्फ बता रहा हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। Why I have not derived completely? Because you know that very well these two equations are important. Derivation you can see that doesn't play any important role, particularly for the solution point of view. That's why I have directly accepted, and in future prospect you have to apply only equations, don't worry. But those students who would like to derive it, so there is a path. What I have done in this diagram, whenever switch is closed, then I have applied simply Kirchhoff's law. You can see whenever switch is closed, then current flows like in this way. Current flows in this way, then apply Kirchhoff's second law. Start with this point. Here, first of all, you are facing negative pole, so I have to, you can see that, consider positive EMF of battery. After that, there is inductor. You can see just after closing of switch, initially current 0, but after that current gradually increases. Whatever the current passing through inductor, it is increasing. Continuously current increases, so current passing through inductor increases. Then you know that very well. The potential difference across inductor is considered negative. So minus L di by dt. This is the potential difference across inductor. Why it is negative? Because current passing through inductor increases. Now there is a resistor. You can see this is the direction of current, and direction of current and your journey both are in same direction. So obviously we have to consider negative potential drop, particularly for this resistor. So minus IR. This is the voltage drop or potential difference across resistor. Why it is negative? You know that very well, because of chapter number 3. Okay friends, now you can see that these both terms get transferred. Now IR already this side, so epsilon minus IR is equal to L di by dt. Now what we have to do? We have to just apply some concept of differential equation. Now you can see here dt and L. dt and L already in opposite side, and this entire term I have transferred in this side. So what happened? करंट को भुगा रहा है, यानी करंट वाले टर्म्स मैंने एक साइड इकट्ठे किए, टाइम वाले टर्म्स मैंने अलग साइड, उसमें L को भी भेज दिया. So L upon dt get transferred, it becomes dt upon L, and here di already present, di upon this entire term epsilon minus IR. Now what's the next movement? You have to consider integration, and here 0 to t, here 0 to I for this limit, and if you simplify, then you will get this answer. You can see this is the answer, it is just in front of you. Ready? This is the answer of current epsilon by R. This is the most important point. Instead of epsilon by R, I can put maximum current. याद करो maximum current. हमने ये डिराइव किया हुआ epsilon by R. Whenever current passing through inductor maximum, then current behaves like a wire. In this situation, there is no consideration of inductance, and that's why only epsilon by R. So this Imax. What is the formula or meaning of Imax? Imax is the maximum current, and what's the equation? It is epsilon by R. Okay, so instead of epsilon by R, you can see here we have written Imax 1 minus E, here minus T, but you can see instead of R by L, I have put up, or I have set up here 1 by tau. In short, tau is equal to L by R. It is called time constant. Now you understand why this equation just in front of you, because of this mathematical katha you can see. But this mathematical process I have explained, don't worry, there is no requirement of consideration at all. This equation should be required in your mind. So ये आपका screenshot आपके दिमाग में होना चाहिए. So this is the first case we have discussed. Time constant also plays very important role. Time constant very large. If time constant very large, that means the rate of change of current through inductor becomes very slow. Either अपन लोग ये दिख ही रहा है इंडक्टेंस टाइम कांस्टेंट इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस. तो जितना इंडक्टेंस ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा उतना टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा. टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऑलवेज जो करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर में से, क्योंकि फॉर्मूला देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना बैक ईएमएफ है वो ज्यादा जनरेट होगा, वो उतना करंट को अपोज करेगा, तो करंट है बहुत ही स्लो चेंज होगा. सुपर. सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव गिवन. नाउ यू कैन सी फ्रेंड, फर्स्ट केस वी हैव डिस्कस्ड. First case is the rise of current. Now we would like to think about the decay of current. That means current decreases. Okay.
And that means when battery is removed from the circuit, sometimes instead of decay current, they use this type of statements. When battery is removed from the circuit, whenever batteries get removed, then obviously current through inductor gradually decreases. This is the maximum value, and now you can see that current get decreased. This is called decay of current. You can see here I have represented a diagram. These are the, you can see the components, all components there, except you can see that battery. Except battery I have represented here. You can see battery is removed. After removal of battery, obviously this circuit I have represented, and this circuit indicating that now current through inductor decreases gradually. Superb. In this situation, what's the formula of decay current? कितने रेट से करंट डिक्रीज होगा? तो दिस इज, यू कैन सी दैट I is equal to I max e raised to t by tau. I max again epsilon by r. Tau again representing time constant, don't worry. So all points are same, no problem at all. But what is the basic difference? Here 1 minus is something, here only e raised to t by tau. So friends, two cases just in front of you. Once again, transient state, then there are two possibilities associated with current. In LR circuit, current either increases, it is called rise of current. Current decreases, it is called decay of current. जब सर्किट में करंट बढ़ता होगा तो rise of current का फॉर्मूला I max 1 minus e raised to t by tau. I max का मतलब हम जानते हैं because of part 9. I max maximum current, its formula epsilon by r. Tau का मतलब है टाइम कांस्टेंट. It is simply the ratio of inductance to resistance. जितना टाइम कांस्टेंट ज्यादा, उतना जिसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर स्लो, वेरी स्लो, डोंट फॉरगेट. एंड सेकंड केस वी हैव डिस्कस्ड डीके ऑफ करंट. व्हेनेवर suddenly batteries get removed from the circuit, then current passing through inductor gradually decreases. So it can be given by equation I max e raised to t by tau. Again tau representing same story, L by r. इधर भी धूम, इधर भी धूम, और ये दोनों धूम है, समझ लो धूमी मचाने वाले जबरदस्त. जो बंदे ऐसा चाहते हैं कि किस तरह इक्वेशन आपने सीधे फेंके है, तो उसका भी जरिया इधर बताया है. There is a path for the improvement, or I can say that for you can see that get the proof of these two equations. So by using this type of mathematical process or path, one can easily derive these two equations. Anyway friends, now we would like to apply these two equations. So now we would like to think about applications of this transient state in different types of numericals. एक दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड अपन लोग सोल्व करते हैं. ज्यादातर जिसे कह सकते हैं कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी देता हूँ जो आपको ट्राई करना है. तो आज अपन लोग ज्यादातर इसमें रहेंगे और लेंस लॉ का बेस बनाएंगे. लेंस लॉ काफी स्टूडेंट्स जब ईएमआई पढ़ते हैं या दूसरी जगह भी उस लोगों ने वीडियो लेक्चर्स एनालिसिस किए होंगे या स्कूल में या दूसरी जगह, तो वहां पे लेंस लॉ सबसे पहले पढ़ा दिया होगा और खत्म भी होके आगे चले होंगे. मैंने लेंस लॉ को लास्ट में रखा है. उसके पीछे का रीजन है, लेंस लॉ है वो एक खतरनाक बंदा है और एक सुप्रीम मैसेज देने वाला है, और उसके न्यूमेरिकल्स, ये सभी न्यूमेरिकल्स वाकई मजा है अभी तक जो हमने देखा हो, मगर जो लेंस लॉ के न्यूमेरिकल्स है उसमें काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता, ऊपर से ही जाता है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव, यू कैन सी दैट, डिसाइडेड दैट वी वुड लाइक टू कवर दिस लेंस लॉ एट द एंड. लास्ट में देखेंगे और बहुत ही सुप्रीम लेवल पे देखेंगे, आपके फंडे क्लियर होंगे, डोंट वरी. तो फ्रेंड्स, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन, बट जस्ट think about, you can see that analysis of these two cases, rise of current, decay of current, formula for rise of current and formula for decay of current. In this equation, tau represent L by R and I max epsilon by R. Okay, so analyze. Screenshot आपके दिमाग में आना चाहिए, just check it. Okay friends, so now we would like to solve question based on, we can say that this discussion. So हर एक बंदा है वो इधर ध्यान रखे. पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो, then we would like to solve. Okay, तो ये चैप्टर का आप समझ लो लास्ट लेवल चल रहा है. I think after that only one lecture we would like to cover. Okay, for JEE NEET and Lenz'S law,
and after that we will think about some new chapter, that means simply chapter number 7. ओके, सो देखो मैंने पहले ही बोला था कि काफ़ी स्टूडेंट्स है वो ऐसा बोलते हैं कि सर सीबीएसई का कुछ पोर्शन डिलीट हो गया, ये हो गया। वो डिलीटेड पोर्शन को भी हम लोग अभी इधर कवर कर रहे हैं। अभी तक अलग अलग बोर्ड के जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो तय करेंगे, तो अपने को अभी कोई इतनी जल्दबाजी में डिसीजन लेना है नहीं। एनीवे फ्रेंड्स, सो ज़्यादातर जेडब्ल्यू नीट के लिए हम लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश करना चाहते हैं। So whatever chapters we have discussed, you know that very well, A to Z we have discussed. So now friends, be ready. So there is one question. You can see JEE NEET. There is a battery. One inductor is associated with it, and there is a resistor. And you can see that there is a switch S. S representing switch. This is the inductor. This is the resistor, and there is a battery of EMF epsilon. Okay, if you think about the data, then resistance 2 milliohm, inductance 5 millihenry, and whatever the battery is connected having voltage of 2 volt. You can see what is the EMF of the battery, 2 volt. Question क्या है? Just think about the question. This is the question. ऐसे question पूछेंगे. Okay, at t is equal to 0 time, at t is equal to 0 time, switch S is closed. t is equal to 0 टाइम पे जैसे ही स्विच क्लोज की, ओके, देन calculate energy stored in inductor at t is equal to 2 second. That's the question. अगर इतना दिया होता, you can see only this one, and it is very easy because it is simply the case number 1. If you ultimately discuss case number 1, that means I can say, sorry, not case number 1, but 3 states. A picture has the 2 states, now 3 states. State 1, initial state, just after closing of switch. Then steady state, after very long time of closing of switch. And intermediate state, it is called transient state. अपन लोग अब t is equal to 0 के लिए डिस्कस करते हैं, तो अपन लोग इनिशियल स्टेट का डिस्कशन करते हैं। बट read the question, you can see calculate the energy stored in inductor at t is equal to 2 second. That means not initial state, not final state. We have to think about intermediate state, that means the transient state. In transient state, then again 2 cases. Number 1, rise of current. Number 2, decay of current. तो अपन लोग को पता है ट्रांजिएंट स्टेट का डिस्कशन है, तो अब हम लोग तय करेंगे राइज ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट। जाहिर सी बात है, बैटरी ऑलरेडी है and battery is not removed, so one point is clear, we would like to think about rise of current. तो अपने को इंडक्टर का एनर्जी कितना स्टोर करेगा वो फाइंड करना है। So friends, first of all, you know that we have to think about a formula. What is the formula of energy stored in inductor? It is U is equal to 1/2 Li square. याद आया? अब अपना प्राइम टारगेट L ऑलरेडी विथ अस, डोंट वरी, I फाइंड करना है। और राइज ऑफ करंट का केस है, सो यू नो दैट वेरी वेल, करंट एट t is equal to 2 second, that means I is equal to I max 1 minus e raised to t by tau। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले इधर इक्वेशन फेंका था, क्यों ये इक्वेशन फेंका? दिस इज द केस ऑफ राइज ऑफ करंट, दैट्स व्हाई। So now you can see here I max, it is epsilon by r 1 minus t tau। tau को अपन लोग इधर एक्स्ट्रा फाइंड कर लेते हैं, tau, that means you know that L by r, you know the time constant L by r, so tau L here 5 milli, r resistance 2 milli, so obviously answer 5 by 2. You can see here, sorry, there is a mistake, not 5 but 4 millihenry given, that's why numerical becomes easy. So correction 4, and there is, you can see that tau is equal to 2. You can see time constant we have found 2. Okay friends, so it is now t by 2. Tau already with us, that's why.
Okay, now we would like to just apply the concept and application of equation, and after that, first of all we have applied equation. This is called application. Now we would like to substitute some value. Epsilon already with you, 2 volt. Resistance already with you, 2 milli. So 2 into 10 raised to minus 3 e raised to, here t, what's your target? To find the current at 2 seconds. So 2 by 2, so 2 by 2 it is 10 raised to 3. 1 minus e raised to 1, you can see. But there is a minus sign, so we have to use this minus sign here also, minus 1. So it becomes simply e raised to minus 1, that means you know that 1 by e. Don't worry, in this data e also given, take e is equal to 3, there is a mistake. Take e is equal to 3 ऐसा information देंगे. Okay, so now set up the values. So I is equal to 10 raised to 3, 1 minus 1 upon 3. So ultimately I is equal to 3 minus 1, so 2 by 3, 10 raised to 3. You can see that's your answer. But this is simply the current we have found. This is not final answer. Your final answer to find the energy stored in inductor. So U is equal to half. What is the value of L? It is 2 millihenry. So minus 3. Current the whole square. So 2 by 3 into 10 raised to 3 the whole square. So if you simplify finally, so what's the answer? Here directly I can write 8 by 9 into 10 raised to 3, क्योंकि 8 cancel होगा, 1 बचेगा, and answer in terms of joule. So this is the most timely question you can see based on transient state. तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट में देने वाला हूँ in terms of your homework point of view, so don't forget. So what happened here, very easy, all masalas with you, just you have to think about तड़का. आपको सब मसाले दिए, तड़का मारना, और तड़का हमने इधर मार दिया, you can see. तो दिमाग बराबर चले और सिचुएशन को डिटेक्ट करना सीख लो तो बहुत इजी, very easy situation. We have to think about transient state and transient state. Then there are two cases, rise of current, decay of current. Here rise of current because battery is already present inside the circuit, and so we have applied the concept of rise of current, and we have found, use the value of current here in the basic equation, energy with you. So most important question analyze. ऐसे question अपन लोग नेक्स्ट लेवल में और पूछेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है. काफी लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब क्या करने की जरूरत है, इतना तो कोई बुक में भी नहीं दिया है, एनसीईआरटी में ये सब कुछ, मगर ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में. एनीवे, नाउ एनालाइज एंड देन विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट. Okay, so now we would like to think about one more. अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा जेडब्ल्यू के लिए बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि आइडियल. सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट ट्राई टू सॉल्व. अब अपने आप ट्राई करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन थ्रू मैंने आपको थोड़ा बेस दे दिया है. सो यू हैव टू अप्लाई योर कंसेप्ट. और कितनी बार बोला, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट भी मिल रही है कि कुछ जो जुनून के साथ हार्ड वर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो वो लोग रडार में आ गए तो उसका नंबर लगेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है कि टाइम आपके पास है तो यूज इट. ओके, और ऐसा मत समझो कि हमारे लिए जिसे कह सकते रिलैक्सेशन मोड चल रहा है ये वो. आपको फ्यूचर में बाद में एक चीज रहेगी दिमाग में, वो है अफसोस, पछतावा. काफी स्टूडेंट्स लास्ट में ऐसा बोलते हैं कि काश अगर मुझे थोड़ा और वक्त मिलता. तो दोस्तों, वक्त किसी के बाप से बंदा नहीं बनता, और सबको 24 आवर दिए, किसी को 26 घंटे नहीं दिए, बराबर. और यही 24 घंटों में जिसे कह सकते हैं लोगों ने जुनून के साथ काम करके अपना मकाम बनाया है. वो फिर ग्रेट साइंटिस्ट कोई भी हो, बेस्ट जिसे कह सकते हैं कि प्लेयर हो, या बेस्ट कोई कंपनी का सीईओ हो, वो लोगों ने वही 24 आवर्स का यूज किया. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस पॉइंट. Now there is a, we can say, the next question number 2. So just try to solve it. Okay, now there is a LR circuit is given. What's my question? Just listen carefully and then try to solve it. Okay, so what's the question? In LR circuit,
when the switch is closed, this is you can see that switch S. When switch S is closed, then how much time will it take? Will write here question. How much time it will take? How much time it will take for how much time will it take for the current to become current to grow to we can say that value to grow to a value n times the maximum value, n times the maximum value. Okay, most IMP here n is you can see that less than 1, don't worry. Anyway, so now you have to think about this question. You can see that how much time it will take for the current to grow to value of n times the maximum value. तो जैसे ही स्विच क्लोज होगी आप जानते हो करंट बढ़ना शुरू होगा. ऑलरेडी ग्रो, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ राइज ऑफ करंट एंड करंट राइजेस. तो अपने को ये फाइंड करना है टाइम. यू कैन सी दैट हाउ मच टाइम इज द यू कैन सी द योर टारगेट. कितने टाइम के बाद जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू से n गुना हो जाएगा. थिंक इट एंड अप्लाई लॉजिक. मैंने कितनी बार बोला है, जैसे ही मैं बोलूं पेन पेंसिल नोटबुक दिमाग कैलसी होना चाहिए. वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, भले 5 मिनट 10 मिनट लगे, बाद में वीडियो को फॉरवर्ड और प्ले करो आगे बढ़ने के लिए प्लीज. ओके, तो अपन लोग शुरू करते. सबसे पहले यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राइज ऑफ करंट. इट इज एप्सिलॉन बाय r. यू कैन आल्सो राइट I max, डोंट वरी. 1 minus e raised to t by tau. Ready? But here your target to find the time for which current to grow to value n times the maximum value. So here this current, here I should be n times of I max. So I max, that means epsilon by r. So instead of I, we have to use n times of epsilon r. You can also use, don't worry, n times of I max. When I epsilon by r is equal to epsilon by r 1 minus t by tau. Ready? So अलविदा दोस्तों, you can see. So here n is equal to 1 minus et by tau. अब यहाँ से B ग्रुप वाले खास नीट कैंडिडेट ये t को सब्जेक्ट फॉर्म में लाना है. So first of all e raised to t by tau 1 minus n. You can see. Ready? check करो ये इधर. Okay, so now you would like to remove this e. Then what happen? If you remove exponential function, then what happen here? Here it becomes logarithmic function. So t by tau is equal to ln 1 minus n. Ready? Now if you remove, you can see that this minus sign t by tau. पहले tau को भेज देते हैं, no doubt. So minus t is equal to tau, simply ln 1 minus n, you can see. Okay, now if you remove this minus sign, then here 1 upon, simply it becomes पहले tau को जिसे कह सकते हैं रखने के बाद इधर अपन लोग t by tau कर दे. So it becomes simply 1 upon, or here there is, you can see that answer required in the form of t. ये लोगों ने जो आंसर तो नहीं दिया है मगर जनरल पॉइंट में अपन लोग कह सकते हैं. Okay, so what happened here? Just check it. Minus t by tau. Here minus t by tau ln. If you think about this minus sign, then t by tau ln 1 upon 1 minus n. Simple. You can see that, yes. And now tau get transferred. So t is equal to tau ln 1 upon 1 minus n. So because of this minus sign, simply you know that very well, logarithmic reciprocal function we have applied. So this is the time in which current grow to, we can say that the n times of the maximum value. तो ये मैंने JEE नीट कंसेप्चुअल पॉइंट डिराइव किया है. शॉर्टकट भी बन सकता है और आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन डिराइव किया है. इसका डिस्कशन करने का रीजन, और ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करने का रीजन है, अगर आप 2020 की सीरीज देखो JEE की,
तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन दिया है। अब वो क्वेश्चन में आपको जैसे कह सकते हैं इधर होमवर्क में देने जा रहा हूँ, जो आपको ट्राई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग वो वापस सोल्व करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि पार्ट 11 में मैं अभी भी कुछ जेडब्ल्यू नीट कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाना चाहता हूँ। सो अपन लोग पार्ट 11 में और लेंस लॉ के भी कुछ डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। सो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, नो डाउट। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। एनीवे, नाउ one question I would like to think about, you can see that for homework point of view, so just concentration required। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आपको ट्राई करनी है, ओके। सो क्वेश्चन नो डाउट, just a minute। Okay, so this is JEE 2020, already asked in 8th January। So just concentration required in the given circuit। Switch S is closed. In the given circuit, switch is closed at t is equal to 0 time. The charge, this is the question, the charge flow in a time t is equal to Tc. There is, you can see the Tc is time constant, nothing. You can see the general time constant given. So the charge flow in time t is equal to Tc simply time constant। Circuit में दे रहा हूँ, you can see that you have already idea about time constant, already we have discussed। This type of diagram is given, there is a switch and there is, you can see that battery, okay। This is the battery having EMF epsilon and there is resistance R and inductor L। So once again I would like to provide options also ताकि आपको solve करने में थोड़ा easy रहे। Question is already given, your target to find charge flow through the circuit in time t is equal to Tc। इतने टाइम पे, in short, time is equal to time constant जितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा जब t is equal to 0 टाइम पे क्लोज किया जाए स्विच को। ऑप्शन ए। सो हियर few options में देना इसलिए चाहता हूँ ताकि पता चले। इट इज एप्सिलॉन L अपॉन ER स्क्वायर। ऑप्शन बी एप्सिलॉन L अपॉन 4ER स्क्वायर। ऑप्शन सी, इट इज एप्सिलॉन L 1 minus E by R, sorry 1 minus 1 by E upon ER square। And option D already here, epsilon L upon ER। Ready? So this type of 4 options given, you have to select, no, you have to first of all obtain the answer, solve this question and then select the right one। Exactly ऐसा होता है, select the right one but after application of logic। ऐसा नहीं चार में से मन भावन सिलेक्ट करो प्लीज। सो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड, यू कैन सी दैट JEE 2020 8th January। तो मस्त क्वेश्चन और ALR सर्किट देखो रिफ्लेक्ट हुआ, इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को रखा है। अब देखो लेटेस्ट जो टेस्ट है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इसको सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अप्लाई लॉजिक एंड ट्राई टू सोल्व इट। मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स होमवर्क में अभी भी लेजीनेस है, वो सब लेजी लाल है, वो सब बंद करके वापस 100% देना शुरू। ओके, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट वन मोर। एक और क्वेश्चन मैं आपको JEE रीजन में से देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, नो डाउट। ओके, तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, यू हैव टू लिसन और यू हैव टू राइट, डोंट वरी। If reversible voltage of 200 volt, if reversible voltage of 200 volt is applied
across an inductor, current in it reduces. Reversible voltage of 200 volt is applied across an inductor. Current in it reduces from 0.25 ampere to 0.25 ampere to 0 ampere. 0.25 एम्पियर में से 0 एम्पियर हो जाता है इन 0.025 मिलीसेकंड. करंट reduces from 0.25 milliampere to 0 ampere, sorry, not milliampere, there is a mistake, 0.25 ampere to 0 ampere in 0.025 millisecond. 0.25 ampere to 0 ampere in 0.025 millisecond. Then find inductance of inductor. इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन मिली हेनरी. चलो ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है, दिस इज आल्सो वेरी आईएमपी एंड दिस इज आल्सो आस्क्ड इन जेडब्ल्यू 2020. तो आप देखो ये 2020 बोछार शुरू. मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, यू हैव टू सॉल्व एट योर होम. नाउ फ्रेंड्स, वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट लेंस लॉ. तो अपन लोग लेंस लॉ शुरू करें उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन अच्छी तरह देख लो. इसका स्क्रीनशॉट दिमाग में आ जाना चाहिए, सोल्व करना है. थिंक अबाउट इट. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ थिंक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो दैट वेरी वेल. लेंस लॉ, काफी लोग ऐसा मुझे बोलते थे कि हर बार आप कोई ना कोई टॉपिक चलाते थे पूरे चैप्टर में, तो जहां पे भी नेगेटिव साइन आता था तो आप बिंदास बोलते थे बाय यूजिंग लेंस लॉ, एज पर लेंस लॉ. ये है क्या चीज? मैंने बीच में इसका सीक्रेट भी ओपन किया था कि अगर कोई बेटा अपने माँ बाप की वजह से कोई मकाम हासिल करता हो, और मैंने ये भी बोला था मकाम यानी मंजिल, मकान नहीं, और वही बेटा उसके पेरेंट्स के सामने हो जाए तो क्या? तो जरा देखो, एक मैंने कितनी बार ये कहानी बताई कि कोई भी स्टूडेंट है, मैं उसका नाम लेता हूँ बिंदास. तो अपन लोग कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें, सपोज एक कोई स्टूडेंट यासु है, तो उसकी डिस्कशन करते हैं. तो यासु को उसके पेरेंट्स पढ़ाने के लिए जी जान लगा देते हैं. कहाँ से भी पैसे ना हो तो भी इधर उधर इकट्ठे करके भी उसको पढ़ाने के लिए जो खर्चा चाहिए वो सब देते थे. इवन 12th में बेस्ट रिजल्ट लेने के बाद अच्छी कॉलेज में, वहाँ पे भी उसको जिसे कह सकते हैं कि बेस्ट फैसिलिटीज. और वहाँ से लास्ट ईयर में वो बंदा जिसे कह सकते हैं कि सिलिकॉन ऑटोमेशन जैसे या टीसीएस बहुत ही बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट लेता है और मुंबई रहने चला जाता है. अब बहुत ही बेस्ट सैलरी थी 2.53 लाख पर मंथ. तो ऑब्वियसली उसका जो रहन सहन है वो चेंज होने लगा, और तभी उसकी लाइफ में कोई लड़की आती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं. अब शादी करने के बाद ये यासु है, वो उसके पेरेंट्स का एक ना एक लड़का है. तो ऑब्वियसली माँ बाप अलग रहे, यानी कि पेरेंट्स अलग रहे, वो और बेटा मुंबई में रहे. वो थोड़ी देर चला, मगर बाद में उसको ऐसा लगा कि पेरेंट्स को कि हम लोग भी यासु के साथ रहने चले जाते हैं, क्योंकि अब हमने बहुत हार्ड वर्क किया, बेटों के साथ रहेंगे और आराम करेंगे. मगर जैसे ही वहाँ रहने जाते हैं, शुरुआत में सब बराबर चलता है, मगर जो उसकी बीवी है बहुत ही हाईफाई होती है, और वो छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर यासु की मम्मी या उसके डैडी के कोई ना कोई नुक्स निकालती थी कि डैडी ये करते हैं, मम्मी ये प्रॉब्लम है, मम्मी का ये है, डैडी का है. और धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स आप जानते हो दोस्तों बड़े बनते जाते हैं, और घर में एक बहुत ही जिसे कह सकते तंग माहौल बन जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में फिर एक टाइम ऐसा आता है, जो यासु की बीवी है वो उसको एक स्टेटमेंट यूज करती है कि तय कर लो, या तो ये घर में मम्मी डैडी रहेंगे या मैं. ये जो फिल्मी डायलॉग आप जानते हो, यानी इसको मैं कहता हूँ आइदर और नाइदर नॉर वाला फंडा. अब वो यासु तो फंसा, और वो ज़्यादा ही जिसे कह सकते हैं कि बीवी की तरफ लुढ़का हुआ था. तो उसने पेरेंट्स के पास गया और थोड़ा ऐसा बताया कि ये सिचुएशन है. मगर दोस्तों पेरेंट्स दैट मीन्स द गॉड. तो पेरेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचते हैं, और कोई पेरेंट्स अपने बेटे बेटियों का कभी नेगेटिव नहीं सोचते. अभी आपको शायद तक 12th में या कॉलेज में ऐसा फील होता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे ये कहते हैं वो कहते हैं.
कोई फैसिलिटीज वाइज मोबाइल नहीं देते हैं तो ले लेते हैं नहीं सब, मगर पेरेंट्स आपका ऑलवेज भला ही सोचते हैं, याद रखना। और वो आपको पता चलेगा जब आप पेरेंट्स बनोगे तब। तो कहानी में अपन लोग जानते हैं कि पेरेंट्स है वो बोलते थे कि बेटा तुम कहते हो तो हम लोग चले जाते हैं। तो आप देखो किसके कारण यासु वो मुकाम पे पहुंचा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। तो जिसके कारण यासु बना और वो लेवल गेन किया, आज वही यासु क्या कर रहा है, उसके सामने उसके खिलाफ हो गया। सो फ्रेंड्स, दिस इज लेंस लॉ। लेंस लॉ यानी जिसके कारण आप बनते हो आप उसी के ओपोजिशन में चले जाते हो। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देयर इज, यू कैन सी दैट कोयला। बिंदास मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूँ समझ लो, यानी लेंस लॉ की एप्लीकेशन भी एकदम पपुटे हो जाएगी। आज अपन लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे ए टू जेड, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। यू कैन सी लेंस लॉ, देयर इज अ कॉइल and you can see there is a magnet, south pole, north pole. This bar magnet already is moving towards this coil. So you know that because of this bar magnet, what happened? Because of bar magnet there is a magnetic field. Because of magnetic field, magnetic flux. So what happened here? You can see these are the magnetic field lines. Magnetic field lines को याद रखना है concept. Magnetic field lines start its journey from north pole and terminating at south pole, like this one. You can see. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यू कैन सी लाइक दिस वन। मगर मैं सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, डोंट वरी। मगर आपको पता चला नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, साउथ में एंट्री हुई, यू कैन सी दैट। सो दिस ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through this considered coil. In short, because of this magnet, what happened? Magnetic flux associated with this coil. But tell me, because of the motion of this magnet, what happened? This bar magnet continuously moving towards the coil. Because of the motion of this bar magnet, what happened? Magnetic flux associated with this coil also changes. And this is the slogan. ये तो फेराडे का डायलॉग, you know that. इस चैप्टर का एक ही डायलॉग यूज करना है बार बार। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। सो here what happened? Because of this motion of a bar magnet, whatever the magnetic flux associated with this coil changes. Because of change in magnetic flux, what happened? Induced EMF, and because of induced EMF, induced current. अब देखते जाना। You can see now we would like to synchronize whatever the story we have discussed. This is, you can see that बाप, माई बाप के बदले मैं लिखता हूँ माई बाप लिख देते चलो, क्योंकि दोनों साथ में जरूरी। माई बाप और ये तो पहले चाहिए, इसके बिना तो आप जानते हो सब कुछ अधूरा। तो ये है आपके माई बाप, ये यासु के पेरेंट्स। Because of the motion of this bar magnet, what happened? Whatever the magnetic flux associated with this coil continuously changes. Change in magnetic flux, induced EMF. And because of induced EMF, you know that very well, induced current. तो इस coil के अंदर अब प्रोड्यूस होगा induced current। ये बना जिसे कह सकते हैं कि यासु। You can see, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, मगर you can see this is यासु। तो ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने में, कोइल में ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने में बेसिकली किसका हाथ है? माई बाप। ये बना जिसे कह सकते हैं, यासु हटा देते हैं, ये बना बेटा। कोई बोले सर आप बेटी भी लिख सकते थे, सॉरी ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ज्यादातर बेटियां हैं वो पेरेंट्स के बहुत ही नजदीक और सबसे पहले होती है। गुजराती में ऐसा है, प्लीज अप्लाई, उल्टा मत समझना। हर बार काफी लोग कोई स्टेटमेंट पकड़ लेते हो तो माफ करना, मैं हर एक बंदा ऐसा होता है ऐसा नहीं कहना चाहता, जनरल बात हो रही है। और गुजराती में हमारे एक कहावत है, अपन लोग जानते हैं कि दीकरो એટલે દીપડો, यू कैन सी दैट। तो ऐसा कहा जाता है कभी कभार, मगर ये सबके लिए नहीं। काफी बंदे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए जी जान लगा देते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं, मगर बेटियां होती है वो ज्यादातर माँ बाप के नजदीक होती है। कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले वो आके खड़ी रह जाती है, इसलिए हमने इधर बेटा लिखा है। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी जो पॉइंट है, हमारी जो जात हम सब लोगों की, उसमें ये सब ब्लेमिंग होते रहते हैं। सो वी कैन से दैट
ऑलरेडी हैबिचुअल अबाउट दिस पॉइंट, डोंट वरी। तो अपन लोग इंड्यूस करंट यानी बेटा, ये बेटा आज ये बेटा बना किसके कारण, माई बाप। अब ये बेटा जिसे कह सकते हैं कि होगा खिलाफ, किसके खिलाफ होगा, माई बाप, और उसके सामने चलाएगा तीर यानी ऑपोजिशन में, और वो तीर क्या है वो मैं इधर लिखने वाला हूं, मगर उससे पहले वापस पूरी स्टोरी। दिस इज द कॉइल, देयर इज अ बार मैग्नेट, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ बार मैग्नेट whatever the magnetic flux associated with this coil continuously changes, change in magnetic flux induced EMF, because of induced EMF induced current। ये इंड्यूस करंट यानी बेटा, ये बेटा वहां तक मकाम पोजीशन जो भी है वो गेन किया किसके कारण, माई बाप, इसकी मोशन के कारण। अगर ये स्टेशनरी कंडीशन में होता तो सपोज दिस बार मैग्नेट इन, यू कैन सी दैट रेस्ट कंडीशन, देन व्हाट हैपन, देन देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो करंट एट ऑल। ये बेटा का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। अपन लोग जानते हैं, हमें 9 महीने हमारी माँ गर्भ में रखती तब जाके हम लोग आते हैं, तो सैल्यूट है, और हम अपन लोग इसीलिए इसको गॉड कहते हैं, यू नो दैट, इसके बिना ये वजूद ही नहीं है। तो ये बेटा अब खिलाफ होता है माई बाप के, बिकॉज ऑफ यू नो दैट वेरी वेल सम रीजंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस और वी हैव डिस्कस। अब ये बेटा निकालेगा तीर, और वो तीर किस तरफ फेंकेगा, ऑलवेज माई बाप की तरफ, और वो तीर क्या है वो चेक करते हैं। तो वो तीर है, यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ करंट व्हिच क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 1 चार्ज, मैं देखो पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 स्टेशनरी चार्ज, बिकॉज ऑफ स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को एक धीरे से टपली मारी थी हमने, चार्ज दौड़ने लगा, मगर वो टपली मारने के लिए, दौड़ाने के लिए चैप्टर नंबर 2 आया, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज परफॉर्म्स मोशन, because of motion of charge current, chapter number 3, and because of current, you know that chapter number 4, magnetic field। तो induced current, so there is, you can see that magnetic field is produced, और ये magnetic field है, ये बंदा किसके खिलाफ यूज करेगा, माय बाप। so this magnetic field, that means you can see that magnetic flux, so this magnetic field always in opposite direction or in opposition of changing magnetic flux through, we can say that coil, ये coil में जो magnetic flux change हो रहा था उसके opposition में, मगर इस coil के अंदर ये coil जो था उसमें magnetic flux जो भी change हो रहा था किसकी बदौलत हो रहा था, एक magnet के कारण। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, because of the motion of bar magnet, magnetic flux associated with the coil, because of this motion changing magnetic flux, changing magnetic flux induced EMF, induced EMF induced current। अब करंट प्रोड्यूस हो गया, और ये करंट प्रोड्यूस होने के बाद इधर खड़ा रहेगा, ये कोयल है उसके सामने खड़ा रहेगा, ऐसा होता नहीं, मैं समझा रहा हूं, समझो। और ये करंट है, अब पूछेगा कि मैं इस कोयल में किस तरफ फ्लो हूं, then there are two possibility, number one like this one, this is called, you know that very well, if you think about, this is called clockwise, अगर उल्टा जाए then anti clockwise, तो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। तो ये बंदा, मगर पहले तो करंट इस तरफ घूमेगा, वो किस तरफ घूमेगा मैं बाद में बता रहा हूँ। तो करंट इस तरफ फ्लो होगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कोइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस बार मैग्नेट, उसके ओपोजिशन में आए, इसी तरफ फ्लो होगा, ये फ्लो होगा, देखा ये कैसे मूवमेंट लेगा, ऐसा ये बेटा है वो बनेगा, वो इस तरह का बिहेवियर करेगा ताकि वो माई बाप के खिलाफ हो जाए। तो ये जो करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट, वो इस तरफ फ्लो होगा एक कॉइल में, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड हो बिकॉज ऑफ दिस करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ओपोजिशन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट, उसके खिलाफत में आ जाए, उसके ओपोजिशन में आ जाए। तो अपन लोग सपोज इधर डिस्कस करें, तो देखो बिकॉज ऑफ दिस मोशन हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड लाइक दिस वन, तो अपने को किस तरह जिसे कह सकते हैं कि ये करंट को फ्लो करवाना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड इसके ओपोजिशन में, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाना है नीचे। ओके, तो देखो आज से मैं जो फंडे दे रहा हूँ सुनना बराबर, पहला कॉन्सेप्ट दिया, जब भी डेटा प्रोड्यूस होगा तो वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, या बेटा इस तरह चलेगा, बेटा यानी इंड्यूस्ड करंट,
चलेगा मतलब फ्लो होगा, हाथ से बेटा इस तरह चलेगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो ऑलवेज किसके ओपोजिशन में होगा, जिसके कारण वो बन रहा है पेरेंट्स के। तो इधर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले इंड्यूस करंट इसमें से इस तरह फ्लो करवाना है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के या इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोज करे। तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, देखो बार मैग्नेट का, इसके ओपोज यानी उल्टा नीचे जाना है। तो आज से मैं जो थंब दे रहा हूँ रूल आप जानते हो, कोई भी कॉइल के लिए याद रखना है। ये देखो ये थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट। अब देखो ऐसे मैं फ्लो करता हूँ, ऐसे यूं ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे फ्लो करवाते यू कैन सी लाइक देन व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ थंब ऑलरेडी इन अपर डायरेक्शन, सो थंब रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर करंट इस तरह फ्लो होगा, अगर बेटा इस तरह चलेगा तो वो पेरेंट्स के खिलाफ नहीं उसके साथ चलने लगे, देखो तो लोचे हो जाएंगे, अपने को तो उसके ओपोजिशन में जाना है, यानी कि पेरेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको ओपोज करना है। तो ऑब्वियसली हमें करंट है वो उल्टा जिसे कह सकते हैं कि फ्लो करवाना पड़ेगा। तो हम लोग अब इसको ऐसे फ्लो करवाएं, तो जस्ट चेक इट ऐसे, तो मैं देखो ये जो था उसके बदले यूं कर रहा हूं, देखो यूं, दैट्स देन व्हाट हैपन, चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसे जा रहा है, देन चेक द डायरेक्शन ऑफ थंब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस due to this flow of current in opposition of the magnetic field lines of the bar magnet or not. So ये लेंस लॉ है और ये opposition में ही है, ये वर्ड था opposition, that's why always we used minus sign, always, or we at present time also using like epsilon is equal to minus d phi by dt, we used, you can see the negative sign because of this opposition word, this minus sign indicating Lenz's law, यानी कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, यानी जो भी फ्लक्स चेंज होगा उसके कारण जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ऑलवेज ऑपोजिशन में होता, किसके, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता उसके, मगर इंड्यूस्ड ईएमएफ के बदले अपन लोग लेंगे इंड्यूस्ड करंट। सो मोस्ट आईएमपी, सो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस, व्हाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन एनी कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड सच दैट it we can say that produce magnetic field and magnetic field is produced by it always opposes the change in magnetic flux through the coil. Most time this is the Lenz's law, easy language में बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में थोड़ा टिपिकल है। once again magnetic flux due to change in magnetic flux of coil, due to change in magnetic flux associated with coil, induced current is produced. This induced current is produced in such a way that magnetic field produced by it, magnetic field produced due to this current always opposes the change in magnetic flux through the coil. Superb, यानी इतना याद रखने का कि जो भी बेटा होगा वो किसके सामने तीर चलाएगा, वो माई बाप के सामने, जिसके कारण बंदा बनता है उसी के ओपोजिशन में बंदा आएगा। ये दिखने में है इजी मगर है टिपिकल, इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है। मुझे आज से एक स्लोगन में दे रहा हूं, देखो जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, तो पहले तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, किसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इंड्यूस्ड करंट है वो वैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको ओपोज करे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता होगा तो हमें डिक्रीज करना है, अगर डिक्रीज होता होगा तो हमें इंक्रीज करना है, यानी उसके ओपोजिशन में जाना है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह करंट फ्लो करवाना है वो हमें डिसाइड करने का पूछेंगे। क्वेश्चन में ज्यादातर यही पूछेंगे कि ये जो सिचुएशन है उसमें इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। मैं एक दो अभी क्वेश्चन देने वाला, डोंट वरी। सो दिस इज योर लेंस लॉ, यू कैन सी दैट Lenz's law always provide information about the direction of induced EMF or induced current. So there are two laws, Faraday's, Lenz. Faraday's law gives idea about magnitude of induced EMF, while Lenz's law provides information about the direction of induced EMF or induced current. Okay, and now one more important point.
एक दो और पॉइंट्स में कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, देखते जाना ए टू जेड पहले, बराबर। ओके, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जरा देखना, अब पहले तो जिसे कह सकते हैं कि मैं ये सिचुएशन को थोड़ा हॉरिजॉन्टली बता रहा हूँ ताकि दूसरी सिचुएशन को भी आप अच्छी तरह समझ सको। रेडी? तो जो लोग देख रहे हो इसके ऊपर से दो इंफॉर्मेशन ले, दो इंपॉर्टेंट मैसेज दिए मैंने। नंबर 1, एक तो लेंस लॉ की कहानी, और एक और कहानी दी पेरेंट्स सिंपली द गॉड। कुछ भी हो दोस्तों, पेरेंट्स के खिलाफ मत जाना, और क्यों नहीं जाना और क्यों उसकी सिचुएशन एक दिन आपको पेरेंट्स बनेंगे तब पता चला जाएगा। एनीवे, सो वंस अगेन यू कैन सी दिस इज द कॉइल, पहले ऐसी थी अब ऐसे रख दी है। दिस इज, यू कैन सी दैट बार मैग्नेट साउथ नॉर्थ, दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल एंड दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यू कैन सी दैट। बस मैं ऐसे रख दिया, रेडी? क्योंकि ये घूम के ऐसे आएगा। ओके, तो ये सब कुछ किस तरह, एक तो मैंने एक फंडा ये बताया, देखो इसमें किस तरह लेंस लॉ से अपन लोग डायरेक्शन करंट की फाइंड करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। वापस पहले से शुरू कर रहा हूँ। अब देखो, बिकॉज ऑफ दिस मोशन व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस associated with this coil continuously change in magnetic flux, induced EMF, induced current, यानी बेटा आ गया। अब ये बेटा ऐसी चाल चलेगा, यानी कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ताकि ये जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसके ओपोजिशन में, या जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोज करे। तो इधर ये जो कॉइल है उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कौन कर रहा है? ये मोशन बार मैग्नेट की। तो देखो, पहला मेथड सिखा रहा हूं अब करंट का डायरेक्शन चेक करने का। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, चेक करो। हमें कैसे पता चले ऐसे जाएगी? क्योंकि नॉर्थ में से जाके साउथ में आएगी। देखो, ना पता चले तो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर देने का। देखो गई ना, नॉर्थ में से निकली, साउथ में एंट्री, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है। एक पॉइंट क्लियर? ओके, अब हमें जिसे कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिशन में जाके, बराबर, इसके ऑपोजिशन में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस करंट है वो किस तरफ होगा? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो अपने को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करनी। तो देखो ये सिचुएशन लो में अगर करंट इस तरफ फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, हमें इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना, तो हम लोग ऐसे करंट फ्लो करवाएंगे। फॉर दिस सिचुएशन ऑफ करंट व्हाट हैपन, फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन, तो मैं ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे फ्लो करवाता हूं। देखो, बिकॉज ऑफ दिस direction of magnetic field what happen, magnetic field, so because of the direction of this current what happen, magnetic field in this direction, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। देखो रेड कलर है वो बेटे ने जो तीर चलाया किसके सामने? ब्लैक कलर के पेरेंट्स के सामने। तो ये जो कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, बराबर। कॉइल के लिए मैंने बताया ऐसी कॉइल होती है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे यू कैन सी। अगर इससे उल्टा होता, इससे उल्टा होता तो जिसे कह सकते हैं कि क्या होता वो अपन लोग डिस्कस करें, मगर उससे पहले एक और मेथड सिखा रहा हूं। पहला पॉइंट ये थंब रूल से अप्लाई करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, अब देखो ये जो कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको पहले डिटेक्ट करने की, इस साइड पास हो रही है तो हमें उल्टा सोचने का, मगर ये फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं है, डोंट फॉरगेट। अगर ये कॉइल में से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर बढ़े, मैग्नेटिक ये मोशन इस तरह हो रहा हो ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाए, तो हमें जिसे कह सकते हैं इसको कम करना है, तो उसके ऑपोजिशन में जाना है। मगर ये बार मैग्नेट का मोशन इस तरह होता हो ताकि ये कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएट हो रही है वो कम होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ानी होगी। क्यों बढ़ानी? क्योंकि बेटा तो ऑलवेज उल्टी चाल ही चलेगा। अगर पेरेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है तो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाएगा, ऑपोजिट। डोंट फॉरगेट, वो मैं सिखाने वाला हूँ। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका एक और है, वो है पोलैरिटी थ्रू। आज से आपको क्या करना है, ऐसी कॉइल है, देखो ये कॉइल सीखना, बराबर। आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल, आपके सामने ऐसी कॉइल है, आप खड़े हो से। और अब इस कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है उसकी दो पॉसिबिलिटीज में ले रहा हूँ। नंबर 1, पहला जो ले रहे हैं वो अपन लोग लेते हैं क्लॉकवाइज।
इसमें इंड्यूस करंट तो दो ही तरीके से फ्लो हो सकता है ना, या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने डिस्कस किया। चलो इसमें से पहले हमने करेक्शन लिया है या कंडीशन लिया है क्लॉकवाइज, तो क्लॉक किस तरह चलती है ना पता चले देख लेने की, यूं क्लॉक, तो दिस इज यू कैन सी क्लॉकवाइज। आप इस साइड से देख रहे हो, यू हैव टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दिस कॉइल। ये जो करंट है वो कौन है, इंड्यूस करंट। रेडी, अगर ये जो कॉइल है उसमें इंड्यूस करंट आप जो देख रहे हो और वो करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज में हो, अगर आप यहाँ से करंट देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो और वो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हो तो ए साइड बनेगा साउथ और ए साइड बनेगा नॉर्थ। बोले कुछ पता नहीं चला, कहाँ साउथ नॉर्थ आ गया। सही बात है, पहले मेटेलिक कॉइल थी, उसमें से करंट प्रोड्यूस होने लगा, क्यों प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट क्यों हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा, जैसे इंड्यूस करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है मतलब ये कॉइल बन गया मैग्नेट, और अगर मैग्नेट है तो वापस क्वेश्चन होगा साउथ और नॉर्थ। तो जब भी ऐसी कॉइल हो, देखो ये रहा आपका जिसे कह सकते हैं कॉइल, ये जिसे कह सकते हैं, अगर मैं सामने से देख रहा हूँ और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये साइड बनेगा साउथ, ऑपोजिट साइड बनेगा नॉर्थ। रेडी, तो ये रट्टे ना मानना हो तो उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। देखो अगर ये नॉर्थ वाला हो और ये साउथ वाला हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट होती है, अभी हमने बताया नॉर्थ में से, और बाहर कहाँ से आएगी नॉर्थ, और अंदर जिसे कह सकते हैं नॉर्थ को किस तरफ जाती साउथ। तो देखो नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को साउथ की तरफ ले जाने का, देखो तो ये कंडीशन। कोई बोले मगर वो तो आपने लिखा उसके बाद, चलो मैं हटा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन है। कुछ लोग तो बोले हो तो आपने नॉर्थ लिखा इसलिए नॉर्थ टू साउथ, हमें कैसे पता चले, ये तो ऐसे भी जाए। ओके, करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, यूं, यू कैन सी दैट, लाइक सामने से देखो तो यूं ऐसे, तो मैं ऐसे फ्लो करवाऊं, यू कैन सी दैट, देन व्हाट हैपन, you can see, suppose this is, you can see the direction, ये अपन लोग देख रहे clockwise, then this is the direction of magnetic field. So you have to think about simply, sorry there is, you can see that mistake from my side, this is, you can see the direction, then this is the direction of magnetic field, तो ये बनेगा magnetic field lines की जर्नी। ready, like this one, you can see clockwise, then this is the direction. so magnetic field line है वो साउथ में से किस तरह जाती, नॉर्थ, और नॉर्थ में से बाहर आई, साउथ में से एंट्री। सो दिस इज, यू कैन सी दैट साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। सॉरी फॉर, यू कैन सी दैट सम प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, बट नाउ फंडामेंटल क्लियरेंस हियर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप सामने से कोई भी कॉइल को देखो और उसमें अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो तो ए साइड बनेगा साउथ पोल, ऑपोजिट साइड बनेगा नॉर्थ पोल। अगर यही कहानी थोड़ी अलग जुबानी यानी एंटी क्लॉकवाइज हो तो आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ये बनेगा आपका नॉर्थ, ये बनेगा आपका साउथ। दिस इज, यू कैन सी दैट वाई। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यूं एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके सामने बता रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर कोई हो ऐसे तो उसमें ऐसे फ्लो होगा, पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, अब ऐसे, तो अपन लोग ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे। सो व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ थंब ऑलरेडी इन दिस डायरेक्शन, सो दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से बाहर आई और साउथ से एंट्री लेती, तो ये साउथ नॉर्थ पता चला। इस तरह कंसेप्ट ये याद रखने हैं। वंस अगेन, इफ यू आर ऑब्जर्विंग द करंट इन एनी कॉइल and current flows in clockwise direction, then observing side south, opposite side north. And if you are observing any coil and current flows in anti-clockwise, then observing side become north pole, opposite side south, clockwise south, anti-clockwise north. और वरना भी मैंने जो कॉन्सेप्ट दिए है वो भी याद रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं। इससे भी हम लोग करंट का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। देखो किस तरह, ये फंडामेंटल एक और बता रहा हूँ, ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन अपन लोग देखने वाले हैं ओके नेक्स्ट लेवल पे। तो जरा देखना, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वापस न्यूमेरिकल ये आपका बार मैग्नेट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, obviously because of this north, what happened, magnetic flux associated with this coil, because of the motion of bar magnet, magnetic flux changes, change in magnetic flux, induced EMF, induced current यानी बेटा। अब बेटा चलेगा चाल, मगर आप जानते हो बेटा चलेगा चाल मतलब बेटा किस तरह
फ्लो हो ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो इसके ऑपोजिशन में हो। तो अब इसमें अपने को करंट फ्लो करवाना है, मगर हमें इस तरह करंट फ्लो करवाना है ताकि ये वो जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मोशन को अपोज करे। तो मोशन और इस तरह हमें इस तरह भेजना है, यानी बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स कॉइल, वी हैव टू मूव दिस कॉइल, सॉरी वी हैव टू मूव दिस बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल है। अब ये कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है करंट, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू करेगा मतलब ये कॉइल बनेगी मैग्नेट, और मैग्नेट तो हम लोग जानते हैं इसके दो पोल हो सकते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो ये कौन सा पोल रखे अगर ये साइड वाला, तो ये मैग्नेट सॉरी ये मैग्नेट भागने लगे, ऑब्वियसली नॉर्थ। क्यों नॉर्थ? नॉर्थ लाइक पोल्स रिपेल, अगर मैं इधर साउथ करूं तो अट्रैक्ट होगा, हमें इसको दूर भगाना है क्योंकि बेटा उल्टी चाल चलने वाला है, ऑलवेज माई बाप के ऑपोजिशन, मेरे माई बाप। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये नॉर्थ करना हो और ये साउथ करना हो, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये यहाँ से, और मुझे ये नॉर्थ चाहिए, तो इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाऊं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, चेक करो ये आंसर आके देखो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह भी आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब कॉन्सेप्ट में बना के दिए, अभी तो इसका मैं वापस ए टू जेड समझाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पार्ट है वो लेंस लॉ में रहेंगे, प्लस कुछ बेसिक शॉर्टकट्स अप्लाई करना का अपन लोग सीखेंगे, इस चैप्टर के शॉर्टकट्स भी देखेंगे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, लेंस लॉ को लोग हल्के में लेते हैं मगर ये लोगों को हल्का कर देता है, डोंट फॉरगेट। सो नेक्स्ट लेक्चर वेरी एमपी, नो डाउट दिस लेक्चर आल्सो प्रोवाइड्स सुप्रीम इंफॉर्मेशन। तो ये बात बेटे वाला फंडा सीख लेना है, एनालाइज दिस लेक्चर एट लीस्ट 1 or 2 times and try to concept you can see the clearance point. So मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट लेक्चर विद ग्रेट पॉइंट्स।